कहती मम्मी आप क्या डालती हो? मैं कहा नमक मिर्च। कह रही मैं भी तो डालती हूँ। मैं कहा पता नहीं। So there is definitely something about this paratha which is very different. Hi guys, so now I'm currently in Dehradun and I've been here from last 5 months for now. I've been stuck here from when the lockdown thing had started, and it was during March when after I was traveling here in Uttarakhand and all the borders and all got sealed, and so I had nowhere to go and I was basically stranded here. So later on I found this place, luckily from one of my friends' reference, and I've been staying here for last 5 months. So today this vlog is not about that. Today this vlog is about I'm gonna show you the paratha that I've been eating from last 5 months, and which as a breakfast, and which I've been enjoying a lot. So I want to show you how it's made and what's so special about that. So let's go. So basically the restaurant is down here. So this is where I stay, and down in this building there's the restaurant where I'm going to go now and eat paratha. So this is like a small restaurant and there are 3-4 tables here. So I'll be sitting on one of them. So I'm waiting for the paratha now. It usually takes 10 or 15 minutes until the paratha is prepared. So now let's take you to the kitchen where the actual paratha is made, and let's see how auntie makes the paratha. Namaste auntie. नमस्ते जी। It's not only about paratha, it's about making paratha with love, with your hands, you know. So that whole love you can feel in the paratha. ये आटा है ना आंटी? हाँ, ये आलू में भर। हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हरी मिर्च। Salt and chili put inside that along with potatoes. So this mixture is pre-prepared and it's then put inside the paratha and then it's made flat. और यहाँ पे बन गया असली पराठा. मतलब 3-3 लगा लो सबके पहले तो हाथ में खाने होता था। तो पहले अपने उसके डबल हो जाते हैं. भरा ही जाता था। So there is this restaurant also, as I showed you here. So people come to eat here, and most of them are students who stay here. But now because of the corona thing that has happened, most of the students and people have gone back to their village. So as you can see, the auntie is telling like they used to have like 200 parathas been made in a single day, but now it's been reduced to 100 or something like that. So auntie, ये पूरे पराठे आप ही बनाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं लंच डालती हूँ। हाँ. So there's another guy who makes, but he usually makes roti, but all of the parathas is made by auntie. तो इसमें इतना ही जाता है, नमक, मिर्ची. हाँ, आलू तो नहीं मिलेगा। फिर वो टेस्ट ऐसा अलग क्यों आता है जो हर जगह नहीं आता? अब मेरी बहू यही तो बोलती है, करी मम्मी मेरे पराठे कोई खाता
मैं बनाती हूँ 4 खाता है। कह रही मम्मी आप क्या डालती हो? मैं कहा नमक मिर्च। कह रही मैं भी तो डालती हूँ। मैं कहा पता नहीं। So there is definitely something about this paratha which is very different. So that I've already tried this paratha, like I've been eating from 5 months, but I'm gonna again tell you guys because you guys don't know how this tastes. So when I start eating, I'm gonna tell you how it tastes actually. You can see it's usually served with curd and also sometimes chili. And here is a paratha. So I'm gonna start eating the paratha now. So you can see how hot and nice this is. And see, it looks so nice. Like I can see chilies right here. And like perfectly made with oil, perfect. And potatoes. So now I'll start eating this and see how it actually tastes. It's so nice and like I can feel all of the different tastes together, like saltness, spiciness, potatoes, chilies, and the smell of the oil. Do you like it? Amazing. I usually have like 3 parathas. But I've seen people having 5 parathas also. But like I usually get full after eating 3 parathas. Every time I eat this, like I feel like eating it for the first time. It has perfect balance of saltiness and spiciness, everything together. And now we have the tea है, चाय आ गया। यहाँ आप भी बैठ जाओ। तो मैं आप क्या बताना चाहोगे पराठे के बारे में? मतलब इतना अच्छा क्यों है ये पराठा वगैरह? मतलब इसमें अलग क्या है? बिकॉज इसमें मैं देखता हूँ तो यही है जो हर कोई डालता है, बट इसमें कुछ तो अलग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो आपको बताओ क्या अच्छा लग रहा है आपको? दूर बैठ जाओ। तो ये है मिस्टर अनूर। ये कोई सब्जियाँ नहीं खाता है, इसे कोई सब्जी नहीं पसंद होता। कुछ खाता हूँ आंटी करा देते हैं। ये कुछ नहीं खाता है, पर मैंने इसको सब सब्जियाँ मिक्स करके खिला चुका हूँ। धोखेबाजी करता है भाई ये। मिक्स करके खिला देते भैया। जो सब्जी पसंद नहीं है यहाँ पे बताओ, धोखेबाजी करके खिला दी जाती है। So I'll cover that later. How fast he makes roti, like with 2 hands. Like it's really fast and it's really nice to see that. I came here on 23rd of March and it was Janata curfew that day. And when I came here, I had a train on next day on 24th March. And like I was stranded basically here because there wasn't any transport or anything over here, and because I had to stay overnight here in Dehradun, and that hotel guy, he wasn't letting me inside because they had got a notice that they won't allow any tourists to stay over here. So that's how like I was stranded here. So I didn't had anything like to stay, or all the trains were cancelled. Like the Indian Railways has stopped all the trains, so I was stranded. And then I was so confused, like where should I go and where should I stay overnight. It was such a difficult situation. And then I contacted one of my friend in Mumbai, like with whose contact she contacted here in Dehradun, and that's how I came in contact with Kapil Bhaiya. And like I came to know like he has a place to stay here, and like he helped me to stay here. And like I'm really thankful and grateful to him, because if that day like I wouldn't find him, like it would have been so difficult for me. Like no one was allowing, or no hotels were allowing me to check in, and I couldn't even travel back to Mumbai because trains and flights, everything got cancelled. So I'm really grateful and thankful to Kapil Bhaiya.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम पे मेरे को मतलब वो दिया तो मतलब मेरी ही जगह थी, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड लाइक यहाँ पे मतलब इवन लाइक एनीथिंग टू ईट एंड ऑल, आई डोंट हैव टू वरी मच अबाउट, बिकॉज द फूड हियर इज़ वेरी मच होममेड, so I don't have to worry much about food, and this type of food like I can eat every day, so it's good and healthy as well. तो कपिल भैया, ये मतलब आपने कितने टाइम से कितना टाइम हो गया है यहाँ पे आपको ये स्टार्ट करने? वैष्णो भोजनालय 1999। अच्छा। मार्च 1999 में ये ओपन हुआ था। हाँ। और अभी तक चल रहा है, आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से। और शशांक भैया जब यहाँ आए तो मैं बिल्कुल जानता नहीं था, केवल फ़ोन पे ही बात हुई। और फ़ोन पे मेरे जो शशांक भैया के दोस्त थे, उन्होंने जिनको बोला था वो हमारे फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने इनके बारे में मुझे फ़ोन पे बताया। और ये यहाँ आए, जब ये आए तो जो रूम इनको मैंने दिया था, जनता कर्फ्यू के कारण मैं अपने घर पर था, और रूम बहुत ही गंदा था। एक दिन पहले किसी ने छोड़ा था। अभी शशांक भैया को मैंने ये बात पहले बताई, तो शशांक भैया ने जब रूम देखा तो वाकई गंदा था वो। जब मैं आफ्टर जनता कर्फ्यू जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने वो रूम साफ कर, एंड आई वाज लाइक आई कैन, इट्स फाइन, लाइक अगर गंदा भी है तो चलेगा, मुझे रूम दे दो बस अभी रहने के लिए। इसी बहाने शशांक भैया जैसे दोस्त हमें मिले, और अब मुंबई जाने का एक कारण भी मिल गया है हमें कि कभी आएंगे तो ज़रूर बिल्कुल मुलाकात होगी। ज़रूर। आपके बिजनेस को कितना मतलब इससे इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस के लिए? बिजनेस को इम्पैक्ट इससे लगभग ऑलमोस्ट 60% नुकसान में चल रहे हैं अभी। मतलब सारे स्टूडेंट, मोस्टली हमारा स्टूडेंट बेस्ड होटल है, स्टूडेंट ना होने से मतलब कि काफ़ी दिक्कत है, बट चल रहा है, ठीक है जो है। करेक्ट, होपफुली सिचुएशन ठीक हो जाए बहुत जल्दी। बट यार देहरादून में तो लाइक ऑल द शॉप्स एंड ऑल मार्केट इज ओपन, जस्ट ऑन संडे इट्स क्लोज। हाँ हाँ, देहरादून की सिचुएशन अच्छी है बाकी शहरों से, बट फिर भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है हमें फॉलो करनी ही है। और हम लोग मैक्सिमम कस्टमर्स को हम टेक अवे दे रहे हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो यहाँ खा पा रहे हैं, जिनको हम जानते हैं या जो भी है। मतलब वैसे हम ज़्यादातर लोगों को टेक अवे का ही दे देंगे, आप अपना पैक करा के लिए। करेक्ट। And this is the tea which soon I'm gonna have. So now I'm going to show you the fastest roti maker here in Dehradun. राजीव देखता रहिए साथ साथ। Mr. Raju bhai. So Raju is basically from Nepal. नेपाल से हो ना? तो कितने साल से बना रहे हो रोटी? हाँ? 10 साल? कैसे सीखे रोटी तुम बनाना? भाई से सीखा। भाई से सीखे। पहले से इतना फास्ट बनाते हो तुम लोग या धीरे धीरे करके सीखे? You can see how fast he is making roti. Once he makes roti, he keeps it here. Again he prepares another one. एक्चुअल हम लोग यहाँ पे इतने साल से कर रहे हैं। हमारा मेरे चाचा ने, मेरे भाई ने थे, मैंने ऐसे बोलते क्या बोला बोल पहले मेरे चाचा ने And I have heard that his brother makes the roti even more faster, like with 2 hands. है ना? 2 हाथ से करते हैं क्या आपके भाई? दो तरह से। 2 तवे पे, like with on 2 pans he makes roti simultaneously. Like that's even more speedier than this. कितना रोटी बना लेते हो 1 मिनट में? हाँ, कभी गिना नहीं? So finally the conclusion. What I think is the taste doesn't only depend on the ingredients you add in food. It's also about the love that you add while making and serving that food, which makes the taste better. So that was my experience here having the breakfast. If you want me to explore any other places where I can go and try the food, then just mention down in the comments. I will be happy to explore these places. It's quite sunny right now here.
I'll go home back. I'll go to my room back and see you again in the next video.